Meanwhile, in Delhi, the development is not surprising at all. The LG and the government simply can't seem to move on from the fact that they hate each other. Today, another round of natak took place. A group of Aam Aadmi Party leaders sat on a dharna over the appointment of a new service secretary. Now, as you know, the Supreme Court has ruled that the power to appoint bureaucrats lies with the Delhi government. The Aam Aadmi Party says the LG is sitting on the file for the last 3 days. These leaders, who you are seeing on your screens, did go inside to meet the LG, and then the LG issued a very angry letter. I'll tell you what he said in just a bit. But today the Supreme Court had to step in again on another appointment on which the LG has been sitting on for the last 4 months. The appointment of the Delhi Electricity Regulator Chief. The Aam Aadmi Party has picked Madhya Pradesh High Court Judge Rajiv Kumar Shrivastava as the DERC chief. But the post is lying vacant because of the ego clash between Arvind Kejriwal and V K Saxena. The top court today scolded the LG and said it cannot stifle the functioning of an elected government and has to act on the aid and advice of the elected government. The court also has said that the power to refer cases for opinion, legal opinion, is only for exceptional cases and cannot be used as a ploy to delay administrative decisions like the LG has been doing. The electricity regulator chief has to now be appointed in 2 weeks, says the Supreme Court. अभी मेरी एलजी साहब से मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि वो सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने वाली फाइल कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इसको भेज देंगे, ताकि बिकॉज सर्विसेज सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं। हम आगे जितने भी प्रशासनिक फेरबदल करना चाहते हैं वो सारे सर्विसेज सेक्रेटरी करते हैं, तो सबसे पहले उनका चेंज जरूरी था। देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि लैंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा बाकी सब मुद्दों पर चुनी हुई सरकार के फैसले मानना एलजी साहब की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया है कि एलजी साहब को चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने पड़ेंगे, तो क्यों साइन नहीं कर रहे हमारी फाइलों पर? 11 तारीख को एक ट्रांसफर हुआ था, आज तक उसकी फाइल नहीं साइन हुई है। एक एक ट्रांसफर के लिए अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेंगे तो हजारों एम्प्लॉइज वाली दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? आप बताइए। Let me go straight across to Pulkit, who is joining us live on the broadcast. Pulkit, ये तो आए दिन रोज की बात हो गई है कि एलजी और आम आदमी पार्टी जो है एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मुद्दे पे लड़ते रहते हैं, लेकिन आज एलजी साहब काफी गुस्सा हुए हैं कि उनके घर के बाहर ये सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए और नेता लोग बैठ गए थे। हालांकि उन्होंने उनको अंदर भी बुलाया था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को और अरविंद केजरीवाल को। वो इतने भड़के हुए क्यों हैं? चिट्ठी में क्या लिखा है? देखिए, आज दिल्ली में देखें तो 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये चिट्ठी जो उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी है, साथ ही अभी थोड़ी देर पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने उल्टा उपराज्यपाल को चिट्ठी में लिखी है, और साथ ही अधिकारियों ने भी उपराज्यपाल से शिकायत की है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है? असल में अधिकारियों का आरोप यह है कि सौरभ भारद्वाज जो सर्विसेज के मंत्री हैं, उनका बर्ताव, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उनका बर्ताव अधिकारियों के साथ ठीक नहीं है, और वो अधिकारियों को अपने कमरे में बैठा लेते हैं और बहुत बहुत देर तक कुछ काम नहीं करने देते, और उनके साथ जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसी पे उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि आपकी सरकार का बर्ताव और साथ ही आपके मंत्री का बर्ताव ठीक नहीं है। लेकिन अब आप पढ़िए कि अरविंद केजरीवाल उस पर क्या लिख रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल को लिखते हुए ये कहा है कि अगर सौरभ भारद्वाज ने ऐसा कहा भी है तो वो आपके छोटे भाई हैं और आप उन्हें बुलाकर डांट सकते हैं। और इसी तरीके से उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच में आपस में लेटर नहीं चलने चाहिए, यानी कि एक दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखी जानी चाहिए। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट कॉर्नर लेने की कोशिश यहाँ की है, लेकिन दिल्ली सरकार और मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं और उपराज्यपाल
तीनों के बीच में इस समय बहुत खराब माहौल है। अधिकारियों की नाराजगी सौरभ भारद्वाज के बर्ताव को लेकर है। सौरभ भारद्वाज और तमाम मंत्रियों और साथ ही सीएम की नाराजगी उस फाइल को लेकर है जो उपराज्यपाल दफ्तर में पिछले 2 दिन से मौजूद है, यानी कि सर्विसेज के सेक्रेटरी की फाइल। तो दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और अधिकारी तीनों आमने सामने हैं। जी चलिए पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ने चिट्ठी लिखी तो दूसरा कैसे पीछे रहेगा, उसने भी चिट्ठी लिख दी। थैंक यू वेरी मच पुलकित। दिस इज एन ऑनगोइंग ड्रामा इन द नेशनल कैपिटल एंड इट्स द थिएटर ऑफ द absurd. But the fact is that it impacts citizens who live in Delhi. Imagine you don't have a services secretary. Imagine you don't have a chief of the electricity regulator. Because the LG has been sitting on the file for the last 4 months. Why? Because he's clashing with the Aam Aadmi Party government. Essentially, Arvind Kejriwal and V K Saxena can fight as much as they want to. Omesh Saigal ji, you're the former Delhi chief secretary joining us on the broadcast. These two gentlemen can fight each other till their last days. Fact is that governance in this city gets impacted. Administration in this city, which is India's face, gets impacted. Of course it will get, there's no doubt that it is impacted, but both parties have to realize that there are rules in the game. The Lieutenant Governor of Delhi's position, even as laid down on by the Supreme Court, in all matters on the state subject is different from the position of the governors of the state. Here, in odd cases, he can refer the matter to the president and not carry out the recommendation of the cabinet. He can also give emergency directions in important matters to the cabinet, which they have to carry out. So his role is slightly different. And then remember one thing, especially like the position of the chief secretary, because he looks after, and there are many other secretaries who look after both police, land and building, plus other subjects. So their role is dual. So how do you now, who decides who will change the chief secretary? So rightly a reference has gone to the Home Ministry. And it must have gone with the recommendation of the Lieutenant Governor, who has a right to make any recommendation he likes. The worst sufferers in this situation are the officers. They are doing a job, they are doing a duty, they have been selected through the UPSC, they are extremely competent people, they have huge experience as compared to what the ministers have. They have experience in their own jobs, as the ministers have experience in their own. So I think you should recognize each other's role. If they don't do that, you are absolutely right. The governance in the city will suffer, and ultimately it is the citizens who will suffer. So, as they say, tali ek haath se nahi bajti. So there has to be understanding on both sides. The officers have to understand the ministers, and the ministers have to understand the officers. I am now not talking of officers, ministers versus the LG. That's a different battle altogether. That is defined by the Constitution. But the role of the officers vis-a-vis the ministers is not defined by any law. It's not defined in any constitution. It has been defined in the last 75 years in how the governments have been functioning in various states, and how all India service officers and Danik service officers and how even the junior officers are treated by ministers. They are not servants and slaves. They are independent people who have been selected by the highest selection procedures. Let us respect them. They have high degrees, they have high qualifications, high experience. Unless they are respected, I think the governance in the state will collapse. It will absolutely collapse. I agree with you. I agree with you there. And it is something that the Aam Aadmi Party government and the LG need to be mindful of as well. These are bureaucrats who are professionals who come here to do a job. Don't make them a pawn between your fight. That has been ongoing now for the last 8 years. Sir, thank you very much for joining us on this broadcast. This was a quick chat. Thank you very much. Good to get your perspective.